যুক্ত থাকুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন কলকাতা নিউজ 19। কন্নড় সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি, বহুমাত্রিক চিন্তক, সংগঠক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং কৃষিজীবী নাগাত্তিহালি রমেশ প্রথম অর্থটিকে সত্য প্রমাণকারী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। রাজ্যস্তরে বহু সম্মানে ভূষিত রমেশ জাতীয় স্তরেও সমধিক মর্যাদা অর্জন করেছেন। ইতিপূর্বে একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত এই সাহিত্যিককে এবার গঙ্গা কাবেরী মহাসাগর ও পৃথিবী করুণা আন্তর্জাতিক পুরস্কার 2026 প্রদান করা হয়েছে। গঙ্গা ও কাবেরী উভয়ই ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। এরা কেবল জনজীবন ও কৃষি সভ্যতার জীবনরেখাই নয়, বরং এই দেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনারও প্রতীক। দুই নদীর উৎস পৃথক, কিন্তু তাদের চূড়ান্ত মিলন এক সমুদ্রে। তেমনি কাবেরীর তীরে জন্ম নেওয়া কবি নাগাত্তিহালি রমেশ সুদূর পশ্চিমবঙ্গে এক মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মান গ্রহণ করে কন্নড় সংস্কৃতির গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ইউনাইটেড জার্নালিস্ট ফোরাম, আনন্দ বাহার এবং ইউনিভার্সাল সোল ট্রি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত পুরস্কারটির তাৎপর্য গভীর। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নদী ও মহাসাগর সংরক্ষণ, মানবিক করুণা এবং পরিবেশগত শান্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে বিভিন্ন দেশের পরিবেশবিদ, বিদ্বজন, সাহিত্যিক, যুব প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যমের কর্মী, সামাজিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান মহাজ্যোতি সদন অ্যানেক্স সেমিনার হলে শুক্রবার 5 জুন 2026 দুপুর 2টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখযোগ্য যে 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি। তারই আরও খবর দেখতে চোখ রাখুন আমাদের সংবাদ মাধ্যমে। ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ 50,000 ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನಾಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಗುರೆ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರವರು ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಅವರಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও প্রচুর পরিমাণে লাইক ও শেয়ার করুন।